into a single. The batting team, Bangalore, JSPL Bangalore, I request you. Okay. This is the second ball. And he tries for the switch hit, but there was no connection with the ball and the bat. And a good delivery, need to say, where bowler bowling a good line in length. And the batsman is being dotted. Nudged into a gap and for a single, quick single, overthrow from the fielder, but they have managed, the fielding team have managed to not let the batting team take more than one run. 3 balls have been completed. Rishabh on the strikers end. Football driven nicely, but straight into the hands of the bowler without any run taking at this ball. It's been a dotted delivery, nothing of it. Rishabh lofts it, sensible, very good stroke, but there's a fielder underneath taking a brilliant catch and an easy catch. Rishabh can't afford this shot in the very first over. It was a good shot, but it didn't find the distance. It was inside the boundary. And a catch was taken by the fielder. An easy catch. Rohit just wanted to drive it, but it's a wide call where the bowler bowling a little far from the leg stump. A free run addition to the total. It's a good delivery, but umpires not given a decision. And it's a dotted delivery. At the end of the 1 over, the score is 3 on the board, and 1 wicket has been fallen up for the batting team. Nikhil is the bowler to bowl the second over. Nikhil is ready to bowl the second over. Right arm bowler to the right hand batsman. And that's the first ball. Driven sharply, and there's a fielder there where he has taken a brilliant catch, an easy catch. He has taken 2 catches. One to depart Rishabh, and now it's Amit. JSPL Bangalore are in trouble now. It's 3 for 2. 2 wickets has been lost in the 2 overs, and it's the first ball of the second over. They have lost their wicket. This shot was not needed, where there was not that power in the shot, and straight into the fielder.
change in the momentum with the single, changing the ends, and he gets off the mark. At the very first ball, he has taken a single. 2 balls up of the second over. 4 balls are still left of the second over. Third ball, and he has driven brilliantly. What a shot! It was much needed for the batting team because they have lost both the openers in the 9 balls, and it's a good shot. A better use of a footwork, which considered 4 runs. There was a try from the fielder, but he couldn't able to stop the ball. It's 8 for 2. Still 3 balls left. Nudged it into the gap, but the fielder is there. Third man fielder who is able to stop the ball and just let the batsman take a quick single. Nishant placed delicately, and he wanted to hit for the same shot which he had driven for the boundary. Now he has just got 2 runs, couple of runs adding up to the mark. Score moves on to 11 on the board. Still last ball remaining of the second over. 11 for 2. Last ball to go. Nikhil is ready to bowl the last ball, and Nishant is ready to face Nikhil. Same shot, same fielder. Fielder fumbles but managed to take the ball and pass it to the keeper. Completion of 2 over, 12 for 2. 2 wickets has been lost by the batting team, but they have managed to score 12 runs. Bowler name? Swapnil is brought into attack by his team to bowl the third over, where 12 for 2. 2 overs. After defending 12 runs to get 2 wickets, just driven delicately, just punched in to the covers, and they are successful in taking a single run. Sharp shot, what a shot! Whipped it just for a leg region, and 2 runs considered. A quick run between the wickets, where the fielder makes a slowly to the ball, and the batsman manages to take 2 quick runs. Third ball on progress. A similar shot, but placed into a fine leg region, and fielder chasing ball, but it went clearing the boundary for 4 runs. Three balls are still left of the third over. Fourth ball is on progress. Swapnil to bowl the fourth ball of the third over. 19 is the score for the loss of 2 wickets.
They take the drive coming from the bat. They take a single and changing the ends. Also, he gets off the mark with the single. The batting team has got the mark of 20, where 2 wickets has been lost in the power play overs. 5th ball on progress. 2 balls are still left of the 3rd over. 20 is the score. Switch it, but fielder is there, and there's another fielder, but he isn't able to stop the ball. It going through his legs. 24. For a boundary for 4 runs. 24 on the board. Last ball to go. 3rd over on progress. Scooped it, but a chance of a catch for the keeper, but he loses the catch. It was hard to catch, but he had made an attempt. A single run addition with this 25 runs on the board after the completion of 3 overs. Alok bowling is the 4th over for his team. Who's the batsman? Nishant is the batsman. What a ball, just driven into the covers and for a quick single. Second ball to go. Switch it, and this was a well-timed and well-placed shot where a batsman getting 4 runs. It was a well-placed where he sees it, he glanced the fielders and just goes for it. He steps out and he joins the party. Another one, another 4 coming from the bat of Nishant. Not Nishant, Rohit. .34 runs has been considered by the batting team JSPL Bangalore for the loss of 2 wickets. Just cuts off where the fielder is still present and they have managed to take a single run. Score jumps to 35 on the board. Still last 2 balls remaining of the 4th over. Right on the block goal, but batsman manages to drive it to the covers and sharply taking a single
A well-timed stroke which helps the batsman not lose his wicket. Last ball where he had a full toss delivery, but he managed to drive it where the ball rolling down the carpet to a boundary, but a fielder is given, just taking a single on the last delivery. The score moves on to 36 on the board after the completion of 4 overs. 37 on the board after the completion of 4 overs for the loss of 2 wickets. Aryan to bowl the 5th over. The spinner coming into the party, and it's a good strike where a square cut from the batsman leads 1 run. A valuable single run addition to the scoreboard. 38 on the board for the loss of 2 wickets. Switch it, and a strike from the batsman which managed 6 runs, a maximum coming from the bat of Nishant. Score is 44 on the board. Still 4 balls left. 6 on the previous delivery. Aryan makes some magic to take his wicket. Third ball, this ball he has driven into the fine leg region for a boundary. Another boundary. 10 runs he has considered in the 2 deliveries he has played. 3 balls has been bowled by Aryan. Still 3 balls left. Aryan has been expensive now. 11 runs he has given to the batting team out of 3 deliveries, and still 3 balls left. Anything can happen, and a wicket can make the bowling team happy. 4th ball, water delivery. He has made a comeback, but the hand goes up. Two balls left, and this ball also is becoming a dotted delivery. Last ball to go. Aryan to bowl the last ball. A good strike, but there was no contact with the bat. And end of the 5th over, it's 48 on the board for the loss of 2 wickets. They have lost their 2 wickets early, but they have managed to go far with the 48 runs. And I now transfer my mic to Mr. Ajay sir for the further innings.
थैंक यू यशस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मैच में इस वक्त टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जीएसपीएल बैंगलोर और हैदराबाद के बीच में मुकाबला चलता हुआ। शानदार दृश्य है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। कैमरामैन, टेक्नीशियंस जो कि इस वक्त आइसक्रीम का मजा लूट रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम है, ठंडा ठंडा। उसके पश्चात और भी शानदार दृश्य वो कैप्चर करेंगे और ऐसे में 2 बल्लेबाज मैदान पर जो कि संघर्ष अपनी तरफ से करते हुए शानदार रनों को बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। इस छोर से इस ओवर की गेंद, यह गेंद टप्पा खाने के बाद उछल कर आई, उस उछाल को कवर किया बल्लेबाज ने, थोड़ा सा अपने बैकफुट पर टो पर उछल कर बल्ले का मोटा सिरा देकर हल्के हाथ से गेंद को कट कर दिया। 1 रन चुराकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपी। रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 49 पर, 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर से तन्मय आक्रमण पर है, स्ट्राइक एंड पर निशान तैयार हो रहा है। तन्मय की गेंद निशान को, और बॉलर्स बैक ड्राइव था, थोड़ा सा लॉफ्टी ड्राइव था, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई। जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा लेते, आसानी के साथ 1 रन को पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ निशांत नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। तन्मय अब गेंद को लेकर इस छोर से लोहित के लिए गेंदबाजी करेंगे। तो आपस में बातचीत करने के पश्चात दोनों बल्लेबाज कुछ योजना बना चुके हैं। लोहित कद काठी में कोई ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। तन्मय की गेंद इस बार जानबूझकर थोड़ा सा ढीला फेंक दिया, गेंद को धीमा कर दिया। जिस तरह से स्पिनर करते हैं उस अंदाज में गेंद को फ्लाइट ज्यादा देते हुए बहुत देर के पश्चात रिलीज किया गेंद को, और इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्लेबाज थोड़ा सा बीट हो गए। फिर से तन्मय आक्रमण पर। कमेंटेटर बॉक्स छोर से ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी। इस बार अंपायर ने कहा कि नो बॉल है। जी हां, बहुत ज्यादा बाहर गई थी और उसको देखते हुए अंपायर ने कहा कि नो बॉल है। 1 अतिरिक्त रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे। उसके अलावा आधुनिक नियम के अनुसार फ्री हिट का अवसर बल्लेबाजों के पास। रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 51 पर, यानी कि 50 का आंकड़ा पार हुआ। तन्मय की गेंद ऑन साइड पर, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, बहुत स्टाइलिश अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से गेंद को उछाल दिया है 6 रनों के लिए। जबरदस्त सिक्सर, और इस छक्के के प्रायोजक थे जीतो स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। रोहित का यह कमाल का स्ट्रोक, और जैसे ही गेंद टिप्पा खाकर उठकर आई, पूरी तरह से पोजीशन बनाकर अपने शरीर के संतुलन को बैकफुट पर ट्रांसफर करते हुए खूबसूरती के साथ लपेटे में लेकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। तन्मय अब क्या योजना बनाते हैं? और विकेट स्टेप आउट किया और एडजस्ट करते हुए गेंद को, क्योंकि गेंदबाज ने गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया था, उसको देखते हुए कलाइयों के सहारे से ऑन साइड की दिशा में घुमाकर गेंद को खेल दिया। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 58 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शाम के 4:25 हो चुके हैं और आज के दिन का ये आखिरी मैच, और मुझे लगता है कि इसके पश्चात 2 मैचेस जो कि फ्लड लाइट्स में खेले जाएंगे। यह गेंद तन्मय की, इस बार चतुराई के साथ, चालाकी के साथ गेंद को थोड़ा सा धीमा जानबूझकर फेंक दिया। ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्लेबाज गेंद को, बल्ले को चला चुके थे, मिस कर गए। फिर अंपायर से कहीं ना कहीं गुहार लगाने लगे कि इस गेंद को वो वाइड करार दें, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा ये क्वालिफाइड अंपायर्स हैं, इस अपील को खारिज किया। शॉट ऑफ लेंथ थी, थोड़ा सा पीछे हटे, रूम बनाकर गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर फील्डर है कवर में, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाकर थ्रो कर दिया और बल्लेबाज को अपने मन को मारना पड़ा कि वो रन चुराना चाहते थे। बहरहाल इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 6 पर, और 6 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ जेएसपीएल बैंगलोर। हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया, लेकिन
2 विकेट्स मात्र अब तक उनको प्राप्त हो चुके हैं और अभी विकेटों की उनको तलाश है। बचे हुए ओवर्स में किस तरह से वो रनों पर अंकुश लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक छोर पर बल्लेबाज रोहित स्ट्राइक एंड पर हैं, निशांत नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। स्कोर आपको मैं बार बार बता रहा हूं, 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बॉलर्स नेम निखिल आक्रमण पर आ रहे हैं। इस छोर से गेंद और उछलने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा डिविएशन के साथ फ्रंट फुट पर ऑन दी अप गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन लाइन से थोड़ा सा अलग रह गए। थ्रू द लाइन खेलने का प्रयास होता तो शायद गेंद के ऊपर आ जाते, बहरहाल थोड़ा सा दूर रह गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रोहित के लिए एक और गेंद थी। रोहित ने इस बार खूबसूरती के साथ झुककर गेंद को स्वीप के अंदाज में खेल दिया है। बाकमाल स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। तो इस खूबसूरत चौके के प्रायोजक थे जीतो की स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। लेंथ में ज्यादा थी, ब्लॉक होल में करना चाहते थे, गेंद थोड़ा सा डिप हुई, उसको देखते हुए झुककर रोहित ने खूबसूरती के साथ बिल्कुल स्वीप के अंदाज में घुटनों को झुकाकर गेंद को खेल दिया। ओ विकेट, एक और गेंद हवा में गेंद को खेल दिया। विकेट कीपर गेंद के नीचे आ गए। सबसे सुरक्षित हाथ, दस्तानों में गेंद कैद हुई। इसी के साथ बल्लेबाज आउट। रोहित आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। इस विकेट के प्रायोजक थे जीतो स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। तो सिद्धार्थ ने शानदार तरीके से गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर। 62 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। निशान नॉन स्ट्राइक एंड पर। आयुष जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और निखिल ने अब गार्ड बदलकर राउंड विकेट करने का फैसला किया और एक खिलाड़ी आयुष के लिए जानबूझकर लगभग थर्ड मैन में रखा गया है और ऐसे में लाइन और लेंथ क्या हो सकती है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस छोर से निखिल आक्रमण पर तैयार। राउंड विकेट गेंद थी और लगभग लेग स्टंप के सीट पर, जिसको थोड़ा सा देखते हुए स्टंप्स को कवर किया और गेंद को ऑन साइड की दिशा में कलाई के सरे से मोड़ दिया। फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल। 1 रन खाते में जोड़ लिए। निखिल अपना खाता खोल चुके। निशांत को जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी। रन्स बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 63 पर। 63 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तेईस के व्यक्तिगत योग पर निशांत बल्लेबाजी कर रहे हैं। निखिल की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। टप्पा खाने के बाद डिविएशन के साथ निकली और इस गेंद को निशांत कट करना चाहते थे, बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया था। बहरहाल मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं विजय प्राप्त की गेंदबाज निखिल ने फिर से वो तैयार। उनकी गेंद ड्राइव किया, सुंदर स्ट्रोक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। फील्डर गेंद को कवर कर रहा है एक्स्ट्रा कवर डीप पे। 1 रन चुरा लिया। हालांकि आयुष दौड़कर आगे आ गए थे, दूसरा रन लेना चाहते थे, पलटकर वापस लौट गए अपने क्रीज के दिशा में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा और इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो संख्या ओवर की बढ़कर इस वक्त पहुंच चुकी है 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 64 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 ओवर्स अभी शेष बचे हुए हैं। बचे हुए 3 ओवर्स में कितने रनों को और दोनों बल्लेबाज बटोर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। आर्यन इस छोर पर 8वें ओवर की शुरुआत के लिए आक्रमण पर आ रहे हैं। उनके गए निशान के लिए और निशान ने इस वक्त बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव था इनफील्ड के ऊपर से और ये 4 रन। तो इस कमाल के चौके के प्रायोजक थे जीतो के स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। शायद पहले ही कमिट हो चुके थे, लेंथ में लगभग ज्यादा थी। मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर ये लंबाई के साथ गेंद थोड़ा सा पीछे हटे और इनसाइड आउट करते हुए गेंद को कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया 4 रनों के लिए। निशांत फिर से स्ट्राइक एंड पर रहे। और विकेट, ये गेंद खेलने का प्रयास मिस कर गया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, जबकि रन्स नहीं मिलेंगे। रन्स अभी भी वहीं पर सर। ऑफ साइड पर क्षेत्ररक्षण का फैलाव काफी जबरदस्त दिखाई पड़ता हुआ इस छोर से इस ओवर की गेंद ड्राइव किया। गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर की दिशा में 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर मिलेगा निशान को और इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 69 पर, 69 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आयुष काफी देर के पश्चात स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तो दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन, गेंदबाजों को बार बार गार्ड बदलना पड़ता है और लाइन और लेंथ में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में क्या होगा? आयुष के लिए गेंद, दोनों ने गेंद को पुल कर दिया। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली मानो गेंद पर 6 रनों की छाप पड़ी हो। कमाल का स्ट्रोक है, 6 रन, जबरदस्त सिक्सर। तो इस विस्फोटक छक्के के प्रायोजक थे जीतो की स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। शॉट ऑफ लेंथ थी, हाफ ट्रैकर कहा जा सकता है। टप्पा खाकर उछल कर आई, बाउंस के साथ आई। उसको देखते हुए आयुष ने खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और फिर से वो स्ट्राइक एंड पर तैयार। राउंड विकेट गेंद थे, इस बार और ज्यादा दूर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से आयुष ने 6 रनों के लिए एक और धमाकेदार छक्का। $81 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एक और जबरदस्त छक्का आयुष के बल्ले से निकलता हुआ। राउंड विकेट, फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये 4 रन। 85 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन्स बन रहे कहें या बह रहे हैं कहना होगा, क्योंकि आयुष ने इस ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसमें गेंदबाज बिल्कुल उनका विश्वास खो चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी करने का प्रयास था लेकिन बल्लेबाज कमाल के निकले। जबरदस्त स्ट्रोक, आक्रामक स्ट्रोक्स लगाकर रनों की बौछार उन्होंने की। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 8 ओवर के समाप्ति पर 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो 9वें ओवर की शुरुआत के लिए कुशल इस छोर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। निशांत स्ट्राइक एंड पर और आयुष नॉन स्ट्राइक एंड पर है। निशांत स्ट्राइक एंड पर तैयार है और विकेट फुल टॉस थी। ऑन साइड पर प्लेस किया गेंद को, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। थोड़ा सा और स्क्वायर खेलते बहुत शानदार तरीके से फ्रंट फुट को थोड़ा आगे निकालकर पिछले पैर को झुकाकर आड़े बल्ले से गेंद को पेडल स्वीप के अंदाज में प्लेस किया था। सुंदर स्ट्रोक था। 1 रन खाते में जोड़ लिए और आयुष इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। कुशल अब क्या करेंगे, क्योंकि पिछले ओवर में जिस तरह से आयुष ने बल्लेबाजी की थी उसको देखते हुए
कुशल को कुछ अच्छी योजना बनानी होगी। राउंड विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। क्या बात है, कुशल ने समझ लिया कि क्या करना होगा उनको। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, लेंथ में ज्यादा थी, लंबी गेंद थी। खेलने के प्रयास में थोड़ा सा रीच करना पड़ा आयुष को, लेकिन वो मिस कर गए, इस गेंद को बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। कुशल के पास गेंद फिर से आ चुका है। राउंड विकेट ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद और एक रन दौड़कर पूरा करने का समय दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 87 पर। 87 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 9वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। कुशल ने इस ओवर में अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की है। वो प्रयास कर रहे हैं, नाजुक नफ्स को पकड़ने का उनका प्रयास चल रहा है। निशांत इस वक्त स्ट्राइक एंड पर। और विकेट, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गुडलैंड स्पॉट से निकलकर स्विंग होकर बल्लेबाज को भ्रमित करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समा गई। खेलना चाहते थे निशांत फ्रंट फुट पर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। इस गेंद के बारे में कुछ समझ नहीं पाए और विश्वास कम था स्ट्रोक में, और विकेट कीपर गेंद को संभाल चुके हैं। कुशल की एक और गेंद फिर से बीट कर गई बल्लेबाज को, और लेंथ में इस वक्त ज्यादा थी और निशांत थोड़ा सा आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को फिर से संभाल लिया और कुशल आक्रमण पर आ रहे हैं। आखिरी 2 गेंदें शेष बची हैं। सिर्फ 2 रन्स अब तक खर्च किए कुशल ने इस ओवर में। और विकेट, एक और गेंद, ये गेंद मिस कर गए। एंगल डिलीवरी थी, लेग स्टंप के बाहर निकली। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। ओवर समाप्त हो चुका है, माफ कीजिएगा। तो इसी के साथ 9वां ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर में मात्र 2 रन्स खर्च किए। कुशल ने बहुत किफायती, बहुत सूझबूझ के साथ शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। कप्तान ने जो विश्वास उन पर रखा था उस पर वो खरे उतर गए और आखिरी ओवर इस वक्त शुरू होने जा रहा है। एक छोर पर आयुष है, दूसरी छोर पर निशांत। अलग अलग तन्मय खोटे का दूसरा और पारी का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। आयुष स्ट्राइक एंड पर है। क्या योजना बनती है? निशांत नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद। जोरदार अपील कॉट बिहाइंड के लिए अंपायर ने कहा कि आउट हो गए। इसी के साथ विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक लिया और बल्लेबाज आउट होकर लौट रहे हैं। आयुष बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के पास। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कॉट बिहाइंड के लिए जोरदार अपील, थोड़ी सी गर्मा गर्मी, लेकिन आप जानते हैं बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर हैं योगा नरसिम्हा, जिन्होंने आउट करार दिया। उनका अनुभव, बिल्कुल अनुभव से भरे हुए पके हुए अंपायर हैं। निश्चित तौर पर अपना 100% दे रहे हैं और मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ियों को स्वीकार करना होगा जो कुछ भी अंपायर इस वक्त देते हैं। थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं जानता हूं कि
खेल में गर्मा गर्मी होती है, उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है। और विकेट ये गेंद थी और इस बार बहुत स्टाइलिश अंदाज में स्लॉग स्वीप का ये बहुत शानदार दृश्य है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद कौसो दूरदर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरी 6 रनों के लिए। तो इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे जीतो की स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। प्रणय का ये कमाल का स्ट्रोक, बहुत स्टाइलिश स्ट्रोक था और स्लॉग स्वीप का ये दृश्य फिर से उछालने का प्रयास, फील्डर वहां पर है नहीं है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई टप्पा खाने के बाद और ये 4 रन। 97 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 97 रन बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और प्रणय इस वक्त कमर कसकर आ चुके हैं कि इस आखिरी ओवर में वो गेंदबाज की पिटाई करेंगे। जबरदस्त स्ट्रोक वो लगा रहे हैं। तन्मय को इस वक्त योजना बदलनी पड़ेगी, पैतरा बदलना पड़ेगा, तन्मय होकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तन्मय को क्या योजना बनाते हैं? गार्ड बदलकर शायद वो जी नहीं, राउंड विकेट ही गेंद करेंगे इस छोर से उनकी गेंद। फिर से उछाल दिया गेंद को, फिर आकाश में गेंद पंछी की तरह उड़ गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और खूबसूरत छक्का, 100 का आंकड़ा पार हुआ। 103 रन बन चुके हैं, क्या बात है। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है जेएसपीएल बैंगलोर की तरफ से। प्रणय ने इस आखिरी ओवर में आकर गेंदबाजों के होश को उड़ा दिया है। जबरदस्त छक्का वो जड़ रहे हैं। अब आखिरी 2 गेंद शेष बचा हुआ है। राउंड विकेट, फिर से उछाल दिया, कैच होगा इस बार। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत कैच, बहुत बढ़िया कैच, कमाल का कैच। क्योंकि गेंद को कैच करने के प्रयास में थोड़ा सा पीछे हटे, शरीर का संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने अपने घुटनों को नीचे रख दिया और संतुलन बनाकर गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर दिया। और इस कैच के साथ ही ये जाबाज, ये विस्फोटक, ये खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप रहा है, जिसको प्रणय कहते हैं। वो अपना काम कर चुके हैं। मुझे लगता है कि डगआउट में उनका तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। इस आखिरी ओवर में चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए अपने टीम को 100 के आंकड़े के पार ले गए। तो शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। इस वक्त आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है। प्रणय स्ट्राइक एंड पर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। अंपायर को मजबूरन वाइड घोषित करना पड़ा। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के दिशा में गई और ये 4 रन। 5 रन खाते में जोड़ लिए गए। और देखा जाए तो इस गेंद को जानबूझकर थोड़ा सा धीमा तन्मय ने किया था, रिलीज धीमा किया था, लेकिन गेंद दिशा से भटक गई और अंपायर को मजबूरन वाइड घोषित करना पड़ा। 5 रन खाते में इस छोर से तन्मय की आखिरी गेंद। राउंड विकेट थी, ड्राइव किया गेंद को फील्डर के दिशा में, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहते हैं, रन आउट का मौका बनेगा, लेकिन क्या अंपायर इस अपील को स्वीकार करेंगे? योगा नरसिम्हा जी ने इस अपील को खारिज किया। 110 रन कुल मिलाकर बना लिए गए और 111 रनों का लक्ष्य हैदराबाद टीम के सामने रखा गया है। तो किस तरह से हैदराबाद अपनी शुरुआत कर पाता है, यह देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इस मैच में कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य इस वक्त रखा गया हैदराबाद के सामने और उनकी बल्लेबाजी का स्ट्रेंथ कितना है, कितने सक्षम बल्लेबाज उनके खेमे में मौजूद हैं, ये देखना होगा। जबकि शुरुआत के मैंडेटरी पावर प्ले का वो किस तरह से उपयोग कर पाते हैं, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। ऐसे में
मैं अपने शब्दों को विराम देकर फिर से अंग्रेजी में मेरे साथी कमेंटेटर को विवरण के लिए बुलाता हूं। यशस आगे के विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार और ज्यादा दूर बाउंड्री लाइन के राउंड विकेट फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वहां पर कोई खिलाड़ी जोरदार अपील कॉट जोरदार अपील कॉट बिहाइंड। और विकेट ये गेंद थी और इस बार बहुत स्टाइलिश अंदाज में फिर से उछालने का प्रयास। फील्डर वहां पर है नहीं है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन इस छोर से उनकी गेंद फिर से उछाल दिया गेंद को, फिर आकाश में गेंद। राउंड विकेट फिर से उछाल दिया, कैच होगा इस बार। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत प्रणेल स्ट्राइक एंड पर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। अंपायर को मजबूरन वाइड घोषित करना पड़ा। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं। दिशा में लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहते हैं। रन आउट का मौका बनेगा, लेकिन क्या अंपायर इस अपील को स्वीकार करेंगे? Counseling and placement services provide you with the support you need to explore career opportunities and secure your place in the professional world. Our campus also offers top-notch facilities, including a modern cafeteria that serves meals to keep you energized throughout the day. CB Bandari Jain College is not just a place to study. It's a place to grow, to explore, and to succeed. JSPL set the target of 111, where the two batsmen have been entered the field. JSPL need to defend it of 60 balls. I request the 12th man of team Hyderabad 11. We need your presence here. Please cooperate with us. Ayush. And Ayush is the man who needs to start the proceedings for his team.
The first ball from the bowler Ayush. The first ball which drived in, and at the very first ball he is playing a foolish shot, but it was a good shot, but it didn't find the distance as well, and he has been departed. Can I know the batsman name who has been departed? A foolish shot, but can you send your 12th man, please? Hyderabad 11. We need to pause the match without the 12th man of the Hyderabad. अंपायर से अनुरोध है थोड़ा सा A good catch taken where a fielder makes no mistake at the second ball and 2 wickets, 2 consecutive wickets in the second delivery of the first over. A good catch. It's a 0 for 2. Batsman needs to stay at the crease to chase the target of 111. And a good partnership should be built by the batters of team Hyderabad 11. It's the third ball. Can he? And he's on the hat-trick wicket. Can he take a hat-trick? Drived in straight to the fine leg fielder, but not runs considered. No runs considered in this ball, where the man Ayush bowling a good bowling spell, where he is not letting the batsmen take a run at the very first over. It's 0 for 2. 3 balls done, still 3 balls to go. What a strike, what a cover drive. Sensible, perfectly struck. Perfect cover drive by the batsman. And with this boundary, the team is opening its what a strike, what a cover drive. The 4. Sensible, perfectly struck. Perfect cover drive. Ayush bowling a great bowling spell with just considering 4 runs in the 4 balls. He has took 2 wickets and dotted 1. And 1 dot ball, and at the 4th ball he has cleared the boundary. Just a tuck, just a tap, where into the long off fielder for a quick single. And with the single run addition, 5 on the board for the loss of 2 wickets. An early fall of wicket, but the batsman managed to take 5 runs. And a last ball is still remaining of the first over.
just sneaked it and straight to the hands of the fielder. Fall of wicket in the first over. 3 wickets has been lost. Ayush has been tremendous through the ball. It's a 3-wicket fall. It and straight. It's a huge loss for the team. Fall of wicket and 3 wickets losing in the very first over by scoring just 4 runs. Just 4 runs. 5. Scoring 5 runs, where the man who has scored just a boundary and a single, scoring 5 runs, 3 wickets has been lost. Batsman still should manage to come back with playing just a singles, dealing with the singles. Dheeraj, there was a chance of a catch. Dheeraj joins the party with Ayush. It's an huge loss and it's a destructive bowler. Dheeraj bowling attack from the team JSPL Karnataka. It's 5 with Ayush. 4 wickets have been lost in the power play overs. They have not ended up with the power play, but they have managed to take 4 wickets, 4 expensive wickets, by letting the batsmen giving 5 runs. Nikhil, who has been brought into attack for the batting team, can he change the techniques where just to deal with the singles, grounded shots is much needed in this situation for the batting team, because 4 catches, all catches have been taken by the fielders of the JSPL. 5 is the score, 96 more needed. 111 is the target to chase for the batsmen of Hyderabad 11. Just a single, driven, a good fielding effort, just a single to release the pressure, where 5 runs was considered and 4 wickets has been taken. He just pushes in and just takes a single to release the pressure. Taps nicely where the fielder is still present and just let the batsman take 1 run. 1 valuable run. 7 run on the board. 4 wickets has been lost. A good shot, a good way to cut the ball, and 3 fielders chasing the ball. They have managed to stop the ball, but batsman taking only a single run, where the scoreboard moves up to 8 on the board for the loss of 5 wickets. It was 5 on the board for the loss of 4 wickets. They have managed to take 4 runs, and now it's still 2 balls left of the second over. A good shot, a good defensive shot, but the keeper is standing like a wall, is not letting the ball go behind him. A defensive stroke, but into the fielder,
and the batsman had an ample time to take a single run. After completion of 2 power play overs, the score is 9 on the board for the loss of 4 wickets. It's been 4 expensive wickets taken by the bowlers of JSPL Karnataka. They have been excellent with the ball in the power play, where the batsmen couldn't able to manage to use the power play when the 2 fielders are out of the 30-yard circle. Harshit is the new man introduced by JSPL Karnataka to bowl the 3rd over, and Aryan, who has managed to bring some runs, some important runs to his team, is still on the crease. Batsman leaving it as it was a white call. It was far from the off stump, and this man giving an gifted run to the batting team, where the score increases to 9 on the board for the loss of 4 wickets. 10 on the board, pardon. What a shot! It had a great timing, but he didn't have the power to go outside the boundary, and it could clear the ropes, but he didn't have the power. It's 5th wicket loss for 10 runs. Just 10 runs on the board. Didn't have the power. 5 wickets has been lost for Hyderabad 11. Score is just 10. 91, 101 runs needed still. Tanmay is walking into the pitch, where he has bought 5th down batsman. Bought has a 5th down batsman, and he has Harshit, who has took the first wicket at the very first ball of his over. Not the first wicket, 5th wicket he has took at the first ball of the over. Second ball, a great change of pace, but there was a chance of a catch, and the fielder managed to take the ball and throw it to the keeper, but by uprooting the bails, the batsman has been safe to take 2 quick runs between the wickets. Four more balls to go to wind up the 3rd over. Time to perfection. This was a great shot played by the batsman, but there was a fielder there waiting for the ball, and not giving any runs in this ball. This ball goes there, change of a pace and change of length also, but batsman managed to take a single run in this delivery. Two more balls are still left to end the 3rd over. 13 on the board for the loss of 5 wickets. Just playing a defensive one, just not giving anything. The bowler managed to pick the ball after a pitch. Last ball to go. Can he take a wicket in the last ball and end the over?
or can he give some runs? A straight drive and just placed it into a long off region for a single run addition. 14 runs on the board. 5 runs has been loosed. 3 overs has been completed. Have been completed. Fourth over, Manav has brought into attack. This time he want to just drive in, but it was far from the bat and the ball. There was no connection. And absolutely nothing of it with the first ball of the fourth over. Second ball to go. It's another dotted delivery, consecutive dotted deliveries for bowler Manav. Four balls are still left of the fourth over. 14 on the board for the loss of 5 wickets. He steps out and a good placement as well, but the fielder is there. And a single run addition where batsman has an ample time to take. Batsman wanted to tap in, but he wasn't able to tap, and he has been dotted. 3 dotted deliveries and a single run considered in the previous delivery. 4 balls have been ended up. 15 is the score. 5 wickets has been lost. A good change of a pace, and it was slightly a bouncer delivery, and the fielder managed to pick the ball immediately. Four overs have been completed. 17 is the score. 5 wickets has been lost. They have lost their 3 wickets in the very first over, but they have managed to bring 17 runs. And it's the completion of 4 overs. 17 runs. Still far more to go. First ball from the new bowler. A good bowling action, but there was no judgment with the batsman to just make a contact with the bat and the ball. Second ball, a very good ball, but a slower one that the batsman had an time
to loft it over the head of the fielder into a 6-run total, which gets Second ball, 23 a on the board very good for the ball, loss of but 5 a wickets. slow Still one that the batsman had 4 in ball left of the time. 5th over. Still 30 balls left after the 5th over. Bowler having a good action, but batsman also managed to take a single in this delivery. Ronak, just he wanted to scoop it, but it was too expensive for him. And another fall of wicket. 6 wickets has been fallen up. And JSPL are on the victory side. 6 wickets, but not now. It's not over. Still 4 more batters are there, and there could be a change in the run also. Rishi, who has come 6 down batsman, who has his team has lost 6 wickets, and he lofted. There's a fielder there in the very first ball. He's going as a golden duck. 24 for 7. 7 wickets have been lost. JSPL are lofted. There's a fielder there huge. in the They have a very big first mark of ball. win percentage, and I can't see the hope of the batting team. Seventh wicket fall. 24 is the score. Last ball is still remaining. 3 wickets lost. Then the bowling team can win this match easily. Batsmen are just lofting in the air, and it's a catch practice for the fielding team. Last ball to go to end the 5th over. 24 is the score. Still 87 required of 31 deliveries. And last ball, a brilliant delivery right into the legs of the batsman, and batsman managed to take a quick single where the fielder just throws it off into the bowler, and batsman had an ample time to take a single run. He just sneaked it out for a single. 25. Rohit
wearing a unique jersey number 27118. 27 by 18. Swapnil, right hand. Swapnil is a batsman on the striker's end, and Nikhil is on the non-striker's end. Nikhil batting on 11, was faced just 10 deliveries, and it's the first ball of the 6th over. It's a good delivery, but fielder underneath, and another fall of wicket. Fielder makes no mistake to take the catch, and a great celebration from the bowler, who is running throughout the ground for a fall of wicket at the very first ball. 8 wickets have been fallen up. 25 is the score. I see no hope for the batting team here. 8 wickets is fallen up. 2 wickets is still there, but I can't see the hope in the batting team. They are not even trying for a singles that can manage them to reach far. Batsman Harish is the batsman. A good delivery, but a defensive stroke, and he needs to stay in the crease where the bowler wants the batsman to retain in the strike, and the score is 25 on the board for the loss of 8 wickets. And another defensive stroke, but he managed to take a single run at the last moment. They sneak it and into the fielders, but nothing of it. 2 are remaining of the 6th over. And the stroke, what a great stroke, a great shot from the batsman Nikhil. He's playing a good cricket where he's batting at 15 out of 12 deliveries, which could help the team to get more runs if he bats like this without losing his wicket. A good strike, good play as well, straight to the fielder, and the batsman managed to take a single run, just a sneak. Nikhil just sneak it, and a vital one at this stage. Next ball is Pranil. Pranil to bowl the 6th over, and at the first ball he just drives it straight to the fielder, and he takes no risk to change the end. He steps out, and there's a fielder there in the long on, but if it had some power, it could be the boundary or a maximum. Third ball, a good delivery, but into the fine leg region for a quick single.
Singles are much needed for the batting team here. But 76 is still required. 78 is still required. Out of 21 deliveries. It is much tough, and this finger goes up. This man, Nikhil, is going back to the pavilion. 9-wicket fall. Rishabh takes a brilliant catch. And there's no hope for the batting team here. It's a 33 for 9. No hope found here. It's 33. Still 78 required. Immediately after this match, I request the players who is playing in the next match, I request you to be ready. And a defensive stroke at the very first ball, but he want to retain his strike. And I find no hope for the batting team to chase the target because 33 is on the board. 78 is still required, and it's the last wicket. If they lose now, a great save from the keeper, saving 4 runs. If still required, stop the ball. Last wicket. If they lose, if he had not stopped the ball, it would be directly for a boundary. Oh, Clearing the great. boundary for 4 save runs. From the keeper. Immediately after this match, the fielders of the fielding team should should enter the field and set the field. And I also request the batsmen also be ready. I think this match will end up very soon. 7 overs has been ended up. Still 3 overs left. A good bowling style, but this man changing the pace, also changing the bowling technique, which was an in-swinger, and batsman couldn't judge the delivery. Second delivery, and there was a chance of a catch as well, but the field was near the stumps. I request the fielding team of the next match to please be ready. Team Pali, I request you. This match is getting ended very soon. And a single in this over, which couldn't help the batsmen. Still 15 balls left and 77 runs required. Batsmen are just delicately playing, not lofting the ball and just not losing the wicket early. They want to play 10 overs match, I guess. Next one more league match. They want to complete 10 overs, I guess. And it's the 5th ball. Just defensively playing. They want to complete the 10 overs with this 34 runs. They still 2 balls left. Sorry, 1 ball left. Another defensive stroke. The intention is clear for the batsmen. So they want to complete the 10 overs. It's good for you. Repeat. Next ball of running.
12 balls left. 77 required for the batting team. 11 ball left. 77 runs required. Some big shots can help the team reach a big mark. Defensively playing the batsman. And overthrow comes in and batsman had ample time to take a single run. Just 10 balls left, 76 runs required. If the batsman managed to hit 10 sixes, he couldn't reach the mark of 76. What a shot by the batsman. He is just continuously playing defensive strokes where the batsman, the team could able just end with the 35 runs. 9 balls left. Can he go for the 6? He's playing delicately, just touching the ball delicately. Gentle touch to the ball and not giving any wicket to the fielding team. No, they are doing net practice. Last 2 balls to go. Can the batsman survive till the last over? Unnecessary outlay. 5th ball to go. What a tap, what a punch, where the batsman just wanted to survive till the last over. The intention is clear for the batsman. Keep one tip, one out. Fielder leaves it and he... What a great fielding from the fielder and taking a last wicket. Congratulations, a big congratulations for JSPL Karnataka. I request a winning team captain and the player of the match who is कि 50 का आंकड़ा पार हुआ। तन्मय की गेंद ऑन साइड पर, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, बहुत स्टाइलिश अंदाज में। JSPL Karnataka, JSPL Bangalore. I request रोहित के to लिए send your एक और captain गेंद थी। and also रोहित the ने player इस of बार the match, खूबसूरती के साथ झुककर गेंद को स्वीप किया, खेल दिया। who is Ayush of और विकेट, एक और गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ गए, सबसे सुरक्षित हाथ दस्तानों में have your player of the match. उनकी गेंद निशान के लिए और निशान ने इस वक्त बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया। क्या होगा? आयुष के लिए गेंद, उन्होंने गेंद को पुल कर दिया। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली, मानो गेंद पर, और फिर से वो स्ट्राइक एंड पर तैयार। राउंड विकेट गेंद थे, इस बार और ज्यादा दूर बाउंड्री लाइन के राउंड विकेट, फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वहां पर कोई खिलाड़ी and the batsman wanted to cut off, but he gets nothing of it. Ayush. It's a chance of a catch as well, and the batsman is running back to the pavilion.